Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are all very fine. Today we are going to read unit number 10, A World Without Books, किताबों के बगैर दुनिया. Starting from first paragraph, an Irish novelist कॉम टाइबन, आयरलैंड के नॉवेलिस्ट कॉम टाइबन ने once recounted a story, एक दफ़ा एक कहानी सुनाई about observing a Cantonese man, एक चीन के रहने के बारे में आदमी के बारे में जिसका उसने मुशाहिदा किया, sitting on कौलोन फुटपाथ, जो कौलोन शहर के फुटपाथ पर बैठा हुआ, reading a book, एक किताब पढ़ रहा था. The man's face was turned with concentration. इंतहाई तवज्जो देने की वजह से आदमी के चेहरे पर सख्ती थी. And his finger tracing the line being read. और उसकी उंगली हर उस सतर पर घूम रही थी जो वो पढ़ रहा था. At times, बाज़-औक़ात, the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. बाज़-औक़ात आदमी के चेहरे पर परेशानी नुमायां हो जाती थी कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था. फाइनली, आखिरकार, द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, जो पढ़ रहा था किताब उसने आसमान की तरफ देखा. व्हाइल हिज फेस वाज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था. इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ सडन जॉय विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, कि ऐसा किताब पढ़ने की खुशी की वजह से था, और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या जो कुछ लिखा था उसको पढ़कर उसने कुछ हासिल किया, और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, या वो इस बात पर खुश था कि किताब का अंजाम कैसा हुआ. द पॉइंट इज दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट. असल बात यह है कि वो इस वक्त एक ऐसे लम्हे की खुशी मना रहा था जो मुकम्मल तौर पर उसकी ज़ाती थी. अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, एक राब्ता था उसके और मुसन्निफ के माबैन. बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, हकीकी दुनिया और जो दुनिया उसके औराक के ऊपर उसके सफ़ात पर बयान की गई थी, उसमें एक राब्ता था जिसके वो खुशी मना रहा था. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग व्हाइल रीडिंग द बुक? दिस इज योर ओन क्वेश्चन. इफ यू हैव रेड इट, यू कैन टेल अबाउट इट. The second paragraph. There is a frequently asked question. अक्सर ये सवाल पूछा जाता है. What would the world be like without books? किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी? The very question is absurd and depressing. ये सवाल ही बहुत अहमकाना और मायूस कुन है. It is always said, हमेशा से ये कहा गया है, that the latest technology signals the demise of the book. जदीद टेक्नोलॉजी किताबों के ज़वाल का इशारा है. Decades ago, दहाइयाँ कबल, it was thought that the radio would replace books. ये सोचा गया था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा. The fear was persisted throughout with the invention of television and internet. और ये खौफ कायम रहा जैसे जैसे टेलीविजन की और इंटरनेट की ईजाद हुई. But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that the modern advances pose a threat to reading. लेकिन ऐसा नज़ारा जो उस चीनी आदमी का था जो किताब पढ़ रहा था, इस ख्याल की सख्त नफ़ी करता है कि जदीद दौर की होने वाली ईजादों से किताबों के पढ़ने को कोई ख़तरा लाहक है. Books are themselves a form of technology. किताबें खुद एक टेक्नोलॉजी की शक्ल हैं, that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. जो कि किताबों के औराक पर फैली हुई है और जो हमें ज़िंदगी की तमाम तर पेचीनियों और उलझनों में गोताज़न होने का मौका देती है. पैराग्राफ नंबर 3. लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस. अदब इंसानों की कहानी होती है. इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग. और ये इस चीज़ का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं. बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज. किताबें हमें दूर दूर का सफ़र करवाती हैं.
During our journey, we are connected with humanity. ہمارے اس سفر کے دوران ہم انسانیت سے جڑے ہوتے ہیں. We identify ourselves with the characters we meet and learn whether we love, loathe, fear or flutter. ہم اس کے بیچ میں مختلف کرداروں سے ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر ہم سیکھتے ہیں مختلف قسم کے جذبات، محبت، نفرت، خوف یا خوشامد وغیرہ. They help us comprehend our faults and aspirations. وہ ہماری مدد کرتے ہیں یہ سمجھنے میں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں. They tell us who could we become if we are not careful. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا بن سکتے ہیں اگر ہم محتاط نہ ہوں. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and a part of larger society. مطالعہ ہمیں ایک اہم ترین رابطہ فراہم کرتا ہے اخلاقیات کے ساتھ، جو کہ ہمیں انسان بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے معاشرے کا حصہ بھی بناتے ہیں. پیراگراف نمبر 4. Books are a source of comfort for us. کتابیں ہمیں راحت فراہم کرتی ہیں. They are safe shelters. یہ ہماری محفوظ پناہ گاہیں ہیں. Throughout human history, man has found peace in written works. پوری کی پوری تاریخ میں انسان نے ہمیشہ لکھے ہوئے کام میں امن و امان یا خوشی حاصل کی. Books are bridges. کتابیں پل ہیں. Through their pages, we make our contact with society. ان کے اوراق کے ذریعے ہم اپنے معاشرے سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. وہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو مطالعہ نہیں کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 5. Through reading book connects us with humanity. It is also the last truly private act in the world that has become too big, too public. اگرچہ کتابیں ہمیں معاشرے کے ساتھ جوڑتی ہیں، یہ ایک دراصل ایسا انسان کا ذاتی ترین فعل ہے جو کہ بہت زیادہ عوامی بن چکا ہے. It actually means libraries, جو کہ عوام کے لیے یا لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. As nourishment for the mind, یہ ہماری کتاب کو ایک توانائی فراہم کرتی ہیں. It is a slow food in a world given over to the fast food. یہ ایک آہستہ دیے جانے والا خوراک ہے جو دنیا کو دی جاتی ہے تیز خوراک کے مقابلے میں. Blogs, text messages and e-books bring relevance and instant gratification much as newspaper and magazines do. جو مختلف قسم کے بلاگ ہوتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز ہوتے ہیں، ای بکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فوری طور پر جو ہمیں معلومات چاہیے ہوتی ہیں اور فوراً ایک وہ ہمیں مطمئن کر دیتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اخبارات یا رسالے کرتے ہیں. بٹ however important such forms are, لیکن چاہے یہ چیزیں کتنی ہی اہم کیوں نہ ہوں، they endure only as long as the stuff they are printed on. یہ صرف تب تک ہمیں مطمئن رکھ سکتی ہیں جب تک کہ وہ حصہ جہاں پر یہ پرنٹ ہے ہمارے سامنے موجود ہے. The comfort of books defy time and break borders. جبکہ کتابوں سے جو ہمیں راحت اور سکون حاصل کرتا ہے وہ وقت کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے جو سرحدیں ہیں ان سے پار ہو جاتا ہے. پیراگراف نمبر 6. Book offers other types of pleasures as well. کتابوں سے ہمیں اور قسم کی خوشیاں بھی ملتی ہیں. The joy of their touch, sound and fragrance is immeasurable. جو خوشی ان کو چھو کر، ان کی آواز سے اور ان کی خوشبو سے ملتی ہے وہ اس کو ناپا نہیں جا سکتا. The pleasure of their understanding is an addition to it. اور کتاب پڑھ کر ہم اس سے جو سمجھتے ہیں وہ بھی ایک خوشی ہے. The sharing of book with friends is still another form of joy. کتاب کو اپنے دوستوں کو دینا بھی ایک اور قسم کی خوشی ہے. Libraries are the evidence of the grandeur of civilization. جو لائبریریاں ہیں وہ تہذیب کی عظمت کی علامت ہیں. یہاں پیراگراف نمبر 5 کے بیچ میں ایک ٹیکسٹ کوسچن ہے. Why does the author use the term fast food and the slow food?
फास्ट फूड और स्लो फूड में एक फ़र्क होता है। फास्ट फूड, जिस तरह आप एक फास्ट फूड शॉप के ऊपर चले जाते हैं, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है और आपको तेज़ी से मिल जाता है। स्लो फूड ये होता है कि एक आपकी अपनी एफर्ट है, आपने उसको आराम आराम से बनाया है, वो आराम आराम से फ्रेश हालत में आपके पास पहुंचा है, जैसा कि किसी ने आराम सुकून से किताब लिखी है। और फास्ट फूड इसी तरह है जैसे आपने किसी को ईमेल कर दिया जल्दी से, या टेक्स्ट कर दिया, या आपने कोई वेबसाइट के ऊपर जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन ले ली, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास अचानक आ जाती है और आपको मतलब उसको आप जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पर इससे ये मीनिंग है दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट ऑल अदर technologies are the fast foods while reading book is a slow food. Now paragraph number 7. It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and growth forwards. ये बहुत ज़्यादा अहम बात है कि हम हर शख्स को ये मौका फराहम करें कि वो किताब से लुत्फ़ उठाए, उसको अपने लिए एक पनाहगाह तस्वुर करे, अपने ज़िंदा रहने का एक तरीका बनाए और उस किताब के ज़रिए से वो ज़िंदगी में या ज़िंदगी की राह में आगे बढ़े। To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history और voice. एक दुनिया को किताबों के बगैर तस्वुर करना बिल्कुल ऐसा है जैसे दुनिया सोच, जज्बात, हमदर्दी, तारीख या आवाज़ के बिना हो जाए। यहाँ पर एक पैराग्राफ में टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द लाइब्रेरी play to promote the habit of reading book? Because the role of library is very important because it is full of hundreds and thousands of books. The people can get the books from the libraries. They can also sit there and read the books in the libraries. So basically library is an important form of provision of the books and an important form of improving the reading among the readers. I hope you understand this chapter. Thank you so much.